Okay, hi guys. So thank you for joining us today. So we have our trainer with us, Mr. Amit sir. So he'll going to teach CCNP security today, basic to advanced level. So without wasting any more time, over to you, Amit sir. Please go ahead. Yeah, thank you. Thank you. Hey guys, welcome to the class. Good evening to everyone. Before starting, I just want to tell something about me. After that, I will know something about you. Then we will start. Is that fine with everyone? Yeah. So most of the things will be English and Hindi. So this will be mix of Hindi and English both. So if someone understands Hindi good, understand English also good. Okay. So guys, my name is Amit and it's been more than 15 years now I'm in industry and I handled so many different projects for different departments and different verticals. For example, I have a few recent projects I'm going through with in a company that is MNC that is in more than 15 countries, and I'm taking care here for all the education related things like technology education department. Apart from that, I also worked in a satellite company. Name is Dish TV, Z News, or you can say Z Network. I also worked with them. I worked with some what is that? Telecommunication companies like Airtel in my previous, and also with Tata. So all these are my clients where I worked with them. Most of the time I spend my time in providing training, creating constructive and wonderful sessions for students on the basis of their need. Apart from, I also worked in different IT and technology companies so that I can excel my skills there and I can check my capabilities if I'm working in under pressure or in the production environment. So this was very brief introduction about me. Now over to you guys. I just want to listen few of them at least so we can start later. Yeah? Who is coming and just tell me your name and your field. That's it. Nothing else I need. Yes, guys, go ahead. Yeah, hi sir, Mukesh this side. Hi, Mukesh. Yeah. Basically, I'm working in IT field in the networking only from past 3 years. So, like I've already done the CCNA and the CCNP and RC, I'm having holding a good knowledge in the routing and switching. So, as well as in the firewall as well. So, I'm looking forward in the security. So that's why I'm here. So, thanks. Good. That's good. Okay. Hi, Arun. Two Arun we have Arun Kumar and Arun A. Yes, Arun Kumar. Yes, I have been into the networking industry for 10 years, and my expertise include in Aruba switching and Cisco switching. So I want to shift my track to security domain. Mm. Oh, okay. Good. Hey, good then, Arun. So, what you have been with any course or any CCNA level training or CCNP? Yes, that have been already done, and certifications also expired. Okay. Mhm. No issue. I think knowledge is the more thing, but Yes. somewhere certification also works for some reputed companies. No worry, that's good. That's good, Arun. Hey, Arun A. Will not take much time, guys. Don't worry. Yeah. Over to Arun A. Just little bit about like if you do not want to share more about you, don't worry. Just tell your name and in what field you are working right now. That's fine for me. I'm just asking who is my audience, okay? So accordingly, otherwise I'm going to start it from scratch again. This cannot be started from scratch, right? Okay, Arun. So you can hear me clearly if you are from you if you are outside.
Yeah, that's nice. Then hi Raghav. Yeah, Raghav is there. Yeah, Raghav. Over to you. Yeah, Raghav, you want to speak? Okay, guys, no issue. So let's start the session for today. No issue, Raghav. If you want to tell or share something, you can put it in chat. I'll be seeing it out later on, no issue. So guys, let's start. So what is the topic? Before going to the topic, let me share my screen first. Okay. And what is the agenda for today? We'll be discussing about the CCNP security track. And in that, what we are going to discuss. So if you guys have any question already, you can ask like what certifications you guys need. But as per my discussion with you, I hope, who is that? Mukesh Sharma already shared that he has good knowledge up to routing, switching, NRC, all those things. He is already trained on. So he already knows so many things about that. But Raghav, do we have do not Raghav, Mukesh, do you have any understanding or any knowledge about what type of certification we should go through if you want to be CCNP security certified? Any idea? No, sir. Currently, I don't have some much idea. So, Mhm. if you can brief me about this, that will be the good for me. Definitely. So, guys, see, let me take my notepad. Before that, let me share my complete screen. So I'll be explaining that. Okay. I hope my screen through. Is my screen through, guys? You guys are able to see this? Yes, sir. Okay, go. Good, good. Okay. So we can start from here. So CCNP security. I am directly jumping to the point. Okay. I'm not going to discuss about what CCNA is. Why do we take CCNA and CCNP? Actually, CCNA is now independent entity. So there is no such prerequisite for taking CCNP security nowadays. But early days, people need to have CCNA first. After that, they can appear for CCNP. But now that is not a prerequisite. Okay, so if someone is interested to take certification, then there is no issue. That person can directly go to CCNP, CCNP Security, CCNP Enterprise Infrastructure, whatever mode they want to go, they can go. So there are so many different tracks available. Okay, so for CCNP Security, there is a core exam. Okay, and after that, you can say supplementary exam, or you can say uh, there is some another name, concentration exam, we sometimes say. Okay, so this is mandate. Okay, so to become CCNP security certified, we need two exams to be passed. Okay, and what are those two exams? First, core exam. This is a mandatory exam to pass. For CCNP security. Okay. So point is here, if you want to become CCNP security certified, so you need to pass core exam. Okay. This is mistyped. Okay. Core exam, that code is I think CCNP core. That is called CCNP security core exam. So this is important to pass if you want to take CCNP security certification. If you want to take that only, then I'm saying. Otherwise, you can directly go in any concentration exam, like there are VPNs, there are next gen firewall like FTD track, there is ICE. So I'm not putting down here the codes. I'm just giving you and helping you with some
very famous technology names which is really related and connected to your security part. There are some web security and email security all together. These are the modules actually. If you want to check that, you can directly visit to cisco.com. You will be getting it everything there in detail. Okay, few I just mentioned here. Okay. So in the core exam, you will be understanding almost everything related security. Okay. Like all these part will come in your this core exam, but not in the very deep level. That will be just most of the things will be there as an introduction or something like associate level things you will get in that particular core exam code. But if you want to be more specialized, then you need to go with any of them. So to become CCNP security certified, you need first this one prerequisite. This is the important one to become certified, and any one of from this. So let's take, you want to take, you took CCNP score plus you took CCNP SVPN is the name, correct name. CCNP VPN I'm just typing here. Okay. Correct name may vary, but I'm just giving you example. So in this way, if you are certified in both, then you are considered as CCNP security certified professional. Making sense, guys? Understanding it? Yeah. So one, you have to take from this part and any one of from here. You just pick and you'll just called as what? CCNP security certified. But if you want to take only one, like you want to take, for example, just you want to give VPN track, you can directly go. There is no prerequisite to take any one code from there. No, you can go directly. No issue is in that. But you will not become CCNP security certified. No, you just you will hold this certification only. Right? But you cannot call yourself like I'm CCNP security certified. To add tag of CCNP security certified, you should have two. One, this is mandate, and any one of from this. Making sense, guys? Understanding it, Mukesh? Arun, Raghav? Ashwini? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Understood, na? So what we are going to learn in our this training, we are going to learn a score completely. Okay. Plus, I think anyone from the management team will help you to understand what they want you to give or in what specialization you are taking. Most probably in the industry, people use VPN with this, okay, to teach. But if you guys are almost in a score, you will understand all the concepts which comes under your security topic. But here, most probably you are going to get everything. Just remove this one. Most probably you are not going to see this one. Why? This is almost on the basis of some software or licensing part. So we do not take care for this. Apart from this one, you are going to see almost everything in that particular code for what you are enrolled or you are planning to enroll. Making sense, guys? So once you will be completing the CCNP security training, you will have knowledge of cybersecurity threats, cybersecurity. What is cybersecurity? What are the firewalls? Types of firewalls available in the market, and different integrated technologies that we can use in our infrastructure to secure them. Like VPNs are there, FTD is a next gen firewall, ASA part is there also as well. So that you are going to see in your this particular code, a score, everything. But few things from them you will be going to understand in depth. So now this is up to you or on the management. You just be connected with them, what part you want to be more specialized in if you want to go for CCNP security certification track. Otherwise, I will be taking care for all the parts in detail. Not only going and touching and coming back. No. Making sense, guys?
So this will be Okay, the sir. bundle of complete security technologies. So initially, most probably I will focus on, I will not say I will not focus on three. All of them I will be focusing on the advanced level. So what you will see in this CCNP score, okay, CCNP VPNs, CCNP ICE, CCNP FTD. All these you are going to get in this particular bundle up to CCNP label. CCNP label means theory plus decent level of lab. Lab at decent level at least. Not very deep, but at least you will understand at some level where you will have good holding on the technology. All right, making sense? Everyone is relating it. Guys, सबको समझ में आ रहा है कि इसके बारे में क्या क्या पढ़ोगे? Little bit brief, let me show you using this slide I have. Please don't mind, this is been created using some online tool. So most probably somewhere you will see this watermark. So please don't mind for that. So before that, let's discuss about who is this course for. So anyone who is network engineer aiming to specialized in security, I think most of you are looking for becoming good in security part, right? That's why you are here and you want to take CCNP security track. Am I right? Yeah? Yes, no? You guys are interested for security, right? Yes, sir. So if yes, then you are at the right place. Second, security analyst you can become after taking this course, or if you are aiming for or SOC professional, you can also become. And after that, this is totally good for CCNA certified professionals ready for advanced training, and they want to go in some cybersecurity field or some field where they want to secure their infrastructure or company at enterprise level or at data center level, whatever they are planning to go. That is very good fit for them as well. And Okay. anyone, yeah, any question? No? No, sir. Till now. Yeah, that is good then. IT professional looking for upgrade their skills in enterprise level security. So also this is planned for them. That is the good part. You guys can have such type of training. So these are the few research based or our ICN based packages which people get after attending such type of trainings. So see, these are the companies who actually hires people who has knowledge at that level. So there are actually so many companies, big giants are available, like Cisco itself hires people having good knowledge up to CCNP security level. HCL is there. Accenture, the good company, third, fourth level company in the world providing solutions, software solutions and security solutions. TCS is there, known for its trustworthiness. Tech Mahindra, Capgemini, Wipro, Deloitte, IBM. Orange Business Services, Palo Alto, British Telecom. There are so many companies actually looking for people having good knowledge up to CCNP security level, guys. So once you have knowledge, you want to apply that, you not need to worry. Just put it in your resume. Most probably, I think our team also will help you to get your job or help you in job getting. I do not have complete idea, but I think if you guys will be in touch, then most probably someone from management will help you. And what salary expectation you can have? If you are going in entry level, most probably 610 LPA, 50-60K in hand, minimum to minimum entry level. See, now everything you guys can see here on the basis of your experience, on the basis of your expertise in the technology, you guys can get. And there is no bar actually for the right candidate in this industry actually. Believe me, guys, security is an industry.
Security is an industry where you guys will never see jobs are not there. No, job always will be there. Even AI is there, doesn't matter. But security is required still. Okay. So even not only in India, you can also earn in dollars. Most probably there are so many companies. I've seen Fortinet, I've seen Palo Alto. They guys hire people for not in, for India, even for international clients. They hire and they deploy you in the different location throughout the globe. So let's you are giving interview in India and you are getting selected for some other location in USA or in UK or some other European countries you guys are deployed on. So that is again you have chance if you have knowledge in this particular all the technologies. Okay, that we are going to see in this particular track. In the track you guys will learn there are few technologies actually are well respected and reputed in the market. Let's take example of Cisco ICE. Very you know respected and reputed code. If you have knowledge of Cisco ICE, actually people having knowledge of Cisco ICE are really in more demand in the market. People having knowledge in Cisco FTD next gen firewall are in more demand in the market. Okay, even not only Cisco FTD next gen firewall, no, even ASA, which is the oldest firewall in the market from Cisco end, that is still in the demand. Okay, there are so many companies having the ASA configured and deployed in their infrastructure. People use them still. They are looking for some candidates if they have good knowledge of ASA. If you know how to run routers, switches, then most probably there will not be any big challenge for people who want to work on ASA firewall. That you guys are going to see in this particular training. You guys no need to worry for that. Everything I will start from scratch, from zero level, and will finish at top level. Okay, guys, making sense? Yeah. Yes, no, I'm expecting answer, guys, if you are listening. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. So I think, yep. See. So curriculum will be like this. See, guys, everyone, you guys can also read. Otherwise, let me help you to understand. This is the core security concept and technologies, like understanding security threats, what can be the issue and what is the threat actually, which actually can cause issue for your company. Vulnerabilities, weakness in your company, risk management, how you can deploy any solution and you can manage your risk, or what are the documentation and prevention techniques you already deployed in your company at infrastructure level to secure your infra. Introduction to Cisco security architecture and zero trust model. Anyone have idea like what is zero trust model? Anyone from you? Do you know what is zero trust? Yeah. So zero trust model actually, if you talk in general, let me tell you, means your your security will never accept anyone and will never trust anyone. If for example, if you are IT manager, you want to enter in the server room, people know that you are security manager, but you do not have any ID or you're not wearing your ID card, you are not allowed to go inside. In general example I'm giving. In the same way, you who you are doesn't matter, but if you do not have valid things or valid posture in your system or in your surrounding, you are not allowed to insert or enter within your infrastructure. That actually zero trust model is. No one, on no one there is no trust. No, we do not believe in anyone. No, we do believe on the security, on the risk management, all these things. So everything comes under zero trust model if such type of model is deployed in your company. Making sense, guys? So close eye in every activity, at every activity people are doing in the company. At what level they belong does not matter. Yeah. Now
think like if in a company that model is deployed, means what type of security they guys are following there in the company. Even if you are employee there at very lower level, your data is saved, you are saved there. No one can come and go and take your or steal your information. If you want to go on some website that is really not good flag situation, you will not be get access of that website. Why? Because zero trust model is deployed there. This is taking care for everything is going on, everything is happening in every system who is the part of that network or that company. Yeah, making sense? Understanding it, guys? Hello, hello. Yes, sir. Yes, sir. Only Mukesh is very active. And what about other people? Hi, Arun. Two Arun we have. Yes, yes, getting it. Okay, Arun, that's nice then. And second module, sorry, we just left here. Role of firewalls. Why firewalls are important and what is their role? VPNs, identity management in securing networks. Okay, identity management in ICE part, most probably you guys will see. After that, we have module 2, secure network access and identity management. Again, how you can verify anyone. So not only user verification, even the device admin verification is also required here. For example, Arun is going to a router and he took remote access of that particular router, and before entering or getting access, like what type of command he can run, he'll be verified and authenticated from some server. Once that is done from there, then Arun will have access of that particular router and what command he is authorized to run in that particular router. Who will take care? You remember this one? There are few technologies in this track you guys you guys are going to learn. That is, for example, Cisco ICE. So Cisco ICE is a very good solution if that is deployed in your company. So once any network engineer is going to take remote access of any networking device like router or switch, what command he is allowed to enter, that will be defined, that will be decided by your Cisco ICE. Okay. If you are a user, normal user, you belong to not any security department or not any networking department, but you belong to any sales department. Once you are approaching your office, you reached office, as you will be connected with your local area network Wi-Fi, or you will connect any Ethernet cable with your laptop, your identity will be checked, and on the basis of your identity, you'll be authorized with what access you have, at what department you belong, and what will be restrictions will be allowed to you, applied to you. Making sense? So all these things are will be taken care if you are understanding and you are taking these trainings, guys. Okay, making sense? Yes, sir. Takax plus radius, everything you guys are going to see here throughout the training part. And let's go to the module 3, next gen firewall technologies. Cisco FTD and ASA, they are the flavors of Cisco firewalls. So in this, you will not only see the introductory part, no, even you will create their rules. You also will be applying their net access control. Access control here is nothing, just the policy rules. Do not worry about that. And deep packet inspection, like once, for example, you are a user sitting in your company and you are accessing some website, that website will be taken care and inspected once what type of thing you are sending there on that website, or what you are downloading from that website. Okay, before downloading, once you will be pinging that website, or you will be using your browser and you will go there and enter the HTTPS and the website URL, at that level this will start taking care. Okay, so very good thing. Like once that website is not in the good flag, like that is not white flagged, so most probably you will not be allowed by whom? By your firewall. Or for example, you got good connection with the website, but you are trying to
download something from there, and that is really having the malware or infected thing. So what your firewall will do, it will check, okay, this has some malware inserted in this particular data, so it will not allow to download that particular data or whatever thing you are downloading from there. Again, intrusion prevention system, another name of the same thing, the role, the type of work they do, and the threat intelligence integration. All these things you are going to see in the module 3. That is called next gen firewall technologies like Cisco, FTD, and ASA, guys. In the module 4, you will be totally seeing what? The VPN technologies. Very good part actually, guys. This is really most important part in your training. Okay, even people will ask you about this only. If I will have chance today, most probably I will be going ahead and will tell you a few things related VPN as well today only. Okay, so not only the VPN part on your Cisco firewalls, even you will see, I will show you on Cisco firewall first, after Cisco router first, after that we'll stretch it up to your ASA firewall, then FTD. How can you configure those VPN technologies using all those devices? In module 5, network visibility and threat detection. Again, that is related some advanced technologies, guys. How can you connect? Most probably this part will be covering here. Okay. And here. This will not be in the more detailed in our technologies, but in our training and technologies part, but you will be getting theoretical knowledge of all these things, but will not be asked so much in the industry if you are visiting or you are going for interview. Don't worry for that. If you are preparing for certification, that is another part. Most probably in CCNP certification, you will be asked questions and you just need to provide answer. Okay. And again, module 6, you will not be in the situation where you don't know anything. Like, you will be seeing the things, how you can automate your things. You do not need to go on everything, every devices again and again and taking physical access of that or remote access of that. You can also automate so and most of the things using this automation technologies are available there. Okay, so this part, this next gen part, secure and ICE part, basic fundamental part, and VPN part, you guys are going to get good training on that, guys. Okay, any questions so far? Please ask. Yeah. So if I will summarize this, then let me write it down here. So first you will see basic network security fundamental. Good. This is the first. After that, you will see VPNs on Cisco routers, VPNs on ASA, then FTD. Okay. Then next gen firewall, not only this, ASA firewall, then ASA firewall completely like routing plus NAT policy. We say here ACP, access control policy is the full form. Short form, and the full form is access control policy, ACP, and you can say this is the main part actually, and then after that VPNs. Then if you are saying here VPNs, then we can put it like VPNs on router, ASA, and FTD. Good. And after that FTD, you are going to see all these things, the same thing. I am giving you a concrete idea. Okay. After that, once the class will start, you will go and see. This part is done. Then you will see ICE. Okay. From basic to professional level. Good. Not last but not least. Last point.
We can add later on few if there is some point is important. FMC, you guys will see where FMC is where you can centrally access your multiple boxes of FTD. So for example, in your company, you have two or more than two firewall deployed, which is next gen firewall FTD, Cisco FTD. So you can access them and you can control them from some central point that is called FMC. So FMC also you will learn, guys, in this. Not only this, apart from that, integration part you guys will see. Integration of Cisco switches with ICE, AD integration with ICE, plus FTD integration with ICE. So all these things you guys are going to get in that particular course. Making sense, guys? And believe me, guys, these things are really very relevant in the market, from the market aspect, as well as very advanced, not very simple. So what our program will be, we shall be starting from zero knowledge, yeah, zero level, and will climb up till, you can say, up to the professional level. Why I'm saying not at the expert level, guys? Because this is CCNP, yeah? But almost expert level you guys will get from here. Making sense? Any questions from here, guys? No? Yes? Anything? Anyone wants to add? Feel free to add, no issue. Is here anyone? No, Ashwini. Okay. Okay. Good, guys, then. So if you are ready, guys, then I can go ahead and can show you something here. I have one very basic topology for today. I made it. Yes, See? sir. So if you want me to show this, then I can show you guys. Okay. There are so many people also joined later on. Let me take a quick understanding from them. Hi, Ashwani. Hi, Divyanshi. Yes, guys, if you want to share your intro, then you can. You are welcome. Ashwani, you want to say something like what are the things you are aware already about, or what is your expertise? Abhishek is also there. Hi, Abhishek. Abhishek, Ashwani, and someone else. Muhammad. One sec, let me take why it's not showing up completely here. Yeah, I think now it's good. Yes, guys, you want to speak something? Some introduction type thing? Mohammad Sheikh, Abhishek, Ashwani? No? You guys are very silent. Why? Don't worry, guys. This is not anything. This is not rocket science class, guys. Don't worry about that. This is very simple. Once I will start, you will start grabbing. Don't worry. Okay, Ashwani Hi, Rajput. sir. No, I Hi, don't. sir. Hi, sir. How are you, sir? Hey, I'm This is good. Muhammad, sir. Yeah, hi, Muhammad. Sir, just now I joined. Can you explain, sir, briefly what the subject we are going to discuss, like a CCNP in a So what? CCNP? Good. So hi, Muhammad. Welcome to the class. So Thank you, actually, sir. we Thank you. discussed so far only the syllabus part and what we are going to learn in this particular module for you are here right now.
So what we discussed, let me share you little bit about again. So these are the parts which we are going to see in this particular module for what you are enrolled for. Okay. Everything like basic network security fundamentals, VPNs, फिर again different parts. Okay. So ये सारी चीजें हम लोग इधर हाँ, देखेंगे। जैसे VPNs हो गए, ओके। राउटर पे पहले कैसे कॉन्फ़िगर करा जाएगा VPN, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने लेवल को हम अप करेंगे, राइट। सो द अच्छा। सेक्शन आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट इज VPN। सो आज मैं VPN से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। दैट इज द वेरी रेपुटेटेड एंड क्या बोलते हैं मार्केट में बहुत डिमांडिंग टॉपिक है VPN। सो आप कहीं पे अच्छा। भी इंटरव्यू देने जाते हो अगर, और आप कहते हो कि मुझे VPNs आते हैं, ऐसे आता है मुझे, सिस्को आइस आता है, सो पीपल विल स्टार्ट आस्किंग फ्रॉम VPN पार्ट। बहुत ही फेमस है। ओके। सो ओके। और ये सिर्फ फेमस ही नहीं है, मैं आपको अगर बोलूं कि आप CCIE सिक्योरिटी देना चाहते हो, सो वहां पे अच्छा। मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द CCIE सिक्योरिटी ट्रैक इज VPN गाइस। VPN से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं उधर भी। तो इतना फेमस सिर्फ अच्छा। इंडस्ट्री, यस सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं है फेमस, इवन सिस्को खुद चाहता है कि आपको अच्छा नॉलेज हो VPN का। सिस्को इटसेल्फ वांट्स यू गाइस should have हाँ, wonderful knowledge of VPNs. So that is the first reason why I'm going to start it first. So पहले इसको देखेंगे हम लोग। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं स्टार्ट कर दिया कि मैंने ऐसे फायरवॉल लगा दिया और FTD लगा दिया, स्टार्ट कर दिया कॉन्फ़िगरेशन, नो। सो हम इसको बहुत ही स्क्रैच से देखेंगे कि VPN होता क्या है, VPN की नीड ही क्यों है, राइट। हम बिना VPN के काम चला सकते हैं क्यों, क्या, करेक्ट। अच्छा, अगर VPN होता है तो VPN में ऐसी क्या क्या चीजें हो रही होती हैं बैकएंड में, जो कि हमें नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर हो अगर हम हैं तो हमें जानना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे हमें जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम ही तो करेंगे ना टी शूट। अगर VPN में कोई इशू आएगा, हमें बैकएंड का पता है कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं, टनल कैसे बनता है, करेक्ट, कैसे क्या क्या चीजें फॉलो हो रही यस। होती, वो सारी चीजें तब हम समझ पाएंगे क्या क्या कमांड्स रन करने चाहिए हमें, किस टनल का क्या काम होता है, इंक्रिप्शन क्या होता है, हैशिंग एल्गोरिदम क्या होते हैं, ये सारी चीजें। वंस वी गाइज शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट, दैट इज द प्री रिक्विजिट ना, देन तब हम तभी तो हम कर पाएंगे हेल्प उधर जा करके। तो वो सारी बात हो गई। इसके अलावा कि ये तो VPN वाला पार्ट हो गया। और जब जैसे ही आप फायरवॉल में आते हो, जैसे ASA फायरवॉल है, सबसे ओल्ड फायरवॉल ऑफ सिस्को, सबसे ओल्ड बोले तो ये अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सो जिसके पास भी ASA फायरवॉल इंस्टॉल है, उनके कंपनी में डिप्लॉयड है, तो धीरे धीरे वो स्विच हो रहे हैं FTD की तरफ। ओके। या कोई और वेंडर की तरफ हो जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ट्रांजिशनल टाइप हो गया, पुराना ओल्ड टाइप ऑफ फायरवॉल। सो इसके अंदर नेक्स्ट जेन फायरवॉल के फीचर्स नहीं है, पहली बात तो। जब मैं बोलता हूं नेक्स्ट जेन फायरवॉल का फीचर नहीं है, मींस मैं बोलता हूं एडवांस सिक्योरिटी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, एडवांस सिक्योरिटी क्या होता है, एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन या एडवांस सिक्योरिटी, लाइक आपका इंटरनेट सिक्योरिटी नहीं है, एप्लीकेशन लेयर की सिक्योरिटी नहीं है। एप्लीकेशन लेयर समझ रहे हो ना, जैसे आप कोई वेबसाइट पे जा रहे हो, उसका यस। ज्यादा ज्यादा कंट्रोल नहीं है ऐसे फायरवॉल में। ये सिंपल सा पहले राउटर था, बाद में इन्होंने उसके अंदर में एक इंजन लगा दिया IPS का, और साथ में इसको ऐसे फायरवॉल बना दिए। सो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है ऐसे फायरवॉल, बट स्टिल पीपल डू यूज दिस इन दियर कंपनी। व्हाई? क्योंकि कुछ कंप्लायंस होते हैं, कुछ क्वालिटी गाइडलाइंस होती हैं, उसकी वजह से लोग ऐसे फायरवॉल अभी भी डिप्लॉय करके रखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने कोई कंपनी ज्वाइन किया, आपकी कंपनी में नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आपने भी वो टीम ज्वाइन कर ली एज अ न्यू कमर। अब पॉइंट वहां पे क्या है, उन्होंने बोला, जो डिजाइनिंग टीम थी उसने बोला भाई सुनो, एज पर क्वालिटी गाइडलाइन ऑफ द कंपनी, हमें जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है या एज पॉइंट पे जो मेरा डिवाइस होगा वो राउटर नहीं होगा, वो फायरवॉल होगा। क्या है इसका मतलब, मींस इंटरनेट की जो लिंक आएगी वो टर्मिनेट होगी किसी फायरवॉल पे, करेक्ट, ना कि किसी राउटर पे। क्या करोगे, अब आप जाओगे मार्केट में, नेक्स्ट जेन फायरवॉल, सो मेनी फायरवॉल्स आर देयर इन द मार्केट, आपने बोला यार सिस्को का फायरवॉल मुझे लेना है, अब क्या करूं, अब सिस्को का फायरवॉल FTD लेने जाओगे, इसका बहुत ज्यादा बड़ा लाइसेंस है। तो पीपल आर अप्रोचिंग ऐसे फायरवॉल, क्योंकि है तो फायरवॉल ना, भले इसके पास बेसिक फीचर्स हैं, है फायरवॉल। और साथ ही साथ ये ट्रांसपेरेंट मोड में भी काम कर सकता है, आप बोल सकते हो L2 मोड में भी काम कर सकता है, जैसे स्विचेस काम करती हैं।
तो कितनी बेहतरीन बात है, कम पैसे में उनका क्वालिटी गाइडलाइन भी फुलफिल हो गई और उन्होंने ऐसे फायरवॉल लगा दिया, फायरवॉल भी लग गया। और फायरवॉल के पावरफुल डिवाइस है, इसके अंदर राउटिंग के भी सारे फीचर्स हैं, ऑलमोस्ट सारे फीचर जो आपके राउटर पे होते हैं। और साथ में इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आईपीएस भी इंस्टॉल्ड है, मतलब फायरवॉलिंग भी कर सकता है, एसीपी लगा सकते हो आप, पॉलिसी लगा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ थ्रू ट्रैफिक फ्लो के बेस पे, आप इस पे क्या कर सकते हो, पॉलिसीज भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो कितना अच्छी बात हो गई। तो इसलिए ऐसे फायरवॉल मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर यूजिंग स्टिल इन द कंपनीज। बट धीरे धीरे अब लोग एफटीडी की तरफ जा रहे हैं, नेक्स्ट जेन फायरवॉल ज्यादातर लोग लगा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में डिजिटाइजेशन इतना ज्यादा अच्छे से हो गया कि थ्रेट्स बहुत ज्यादा है, सिक्योरिटी ब्रीच होना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि देर आर सो मेनी यूजर्स हैविंग मोबाइल फोन इन देयर हैंड एंड दे आर डूइंग एनीथिंग, गाइस बिलीव मी, एनीथिंग दे आर डूइंग। किसी कोई टूल मिल गया, आपकी कंपनी पे अटैक ही कर दिया उसने, डीडोस अटैक मार दिया। अब अगर आप एडवांस लेवल की सिक्योरिटी नहीं डिप्लॉय करोगे अपने कंपनी के लिए, इंफ्रा के लिए, आपकी कंपनी का सारा डेटा उड़ा देगा कोई। करेक्ट, आपका सर्वर डाउन कर दिया, आप एक ई कॉमर्स कंपनी, आपके वेबसाइट पे किसी ने अटैक किया, डीडोस अटैक, आपकी सर्वर ले गया, डाउन कर दिया वेबसाइट, क्या करोगे अब? आपका बिजनेस ही आता था ई कॉमर्स वेबसाइट से, वेबसाइट ही डाउन हो गई। करेक्ट। और कोई नया नया किडी आया था, वो छोटा बच्चा ही था, वो हैकिंग सीखा था, उसने अटैक कर दिया आगे कंपनी पे, हो गया काम। So that's why we need some next gen firewall features. So people are just shifting from traditional to next gen firewall. ओके। और इन सारी चीजों को कैसे हम डिप्लॉय करेंगे ऑल टुगेदर, अपने कंपनी का एक एग्जांपल लेकर के, ऐसा हम हाइपोथेटिकली मान करके चलेंगे कि इस तरह से कंपनी है। हालांकि मैंने कंपनीज में रियल डिजाइनें भी देखी हैं, तो उसके बेस पे मैं आपको ये बताऊंगा। सो यू गाइज विल रिलेट इट वेल। ओके। सो आप अगर कंपनी में इंटरव्यू दे करके सिलेक्ट होके जाते हो, तो आपके लिए नहीं होगा अरे ये तो मैंने पहली बार देखा, नहीं, आपको पहले से पता रहेगा उसके बारे में काफी काफी अधिक चीजें। तो आप उधर जब ज्वाइन करोगे, देन यू गाइज विल हैव आइडिया कि हो मैंने तो ये काम करा है, राइट? मेकिंग सेंस ना? सो ऑल Yes. दीज थिंग्स यू गाइज विल सी। सो आज हम बहुत ही ज्यादा फेमस सा टॉपिक है इन द मार्केट इवन, वो वीपीएन का है। तो हम वीपीएन स्टार्ट करते हैं आज। एनीवन हैव क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क गाइस। वीपीएन, किसे कोई प्रश्न अभी तक? बाकी जो कल से आपका क्लास होगा, आई विल बी टॉकिंग विद द मैनेजमेंट, तो वहां से हम मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मॉड्यूल्स। सो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, लाइक इंट्रोडक्शन पार्ट वी आर गोइंग थ्रू, और वी आर सीइंग हियर। ओके, अंडरस्टूड गाइस? Okay, sir. So any question so far, anything is coming in your head, like you want to be satisfied or clarified on that topic? You guys come first. After that, I am going to give you a little bit idea about what is VPN and why VPN. Yeah. एक्चुअली सर आई जस्ट वांट टू नो लाइक ये जो लाइक ईवीएनजी है ये हमारे लैपटॉप पे रन करेगा इसका जो सर्वर होगा या फिर लाइक आपकी साइड से हमें इसका एक्सेस मिलने वाला है लाइक आपके सर्वर पे इंस्टॉल्ड होगा। अभी तो हमारे सर्वर पे इंस्टॉल्ड है। अगर आप चाहते हो, आपके पास गुड कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप है, यू कैन इंस्टॉल इन योर लैपटॉप एज वेल। I'll be helping out with that all the things, like what is the required part you need. So अगर आपको चाहिए ओके तो मैं सारी चीजें आपको दे दूंगा। और अगर किसी बहुत ज्यादा लोगों को अगर कोई चैलेंज आ रहा होगा इंस्टॉलेशन वगैरह में, तो आई विल टेक अनदर सेशन टू एक्सप्लेन यू गाइज, या कोई एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा कैसे कैसे क्या चीजें इंस्टॉल करो। करेक्ट। श्योर श्योर सर नो इशू थैंक यू सो मच सर प्लीज सो सर, कंटिन्यू। राइट नाउ, आपकी तरफ से भी हमें मिलेगा ना एक्सेस लैब्स यस का? यस, लेट मी स्पीक सर। हाँ, हमारे एंड से भी आपको एक्सेस मिलेगा गाइस। सो यू विल बी गेटिंग द लैब एक्सेस फ्रॉम आवर एंड, दैट विल बी 24/7। एंड बाकी फीस एंड प्राइसिंग यू कैन गेट इन टच विद योर काउंसलर एज वेल। सो अभी सिर्फ कंटेंट पे फोकस करते हैं। और जैसा सर ने बताया दैट वी विल ऑल्सो हेल्प यू टू इंस्टॉल द सिस्टम इन, टू इंस्टॉल द लैब इन योर सिस्टम एज वेल। So both options are available for each and every person. Continue, sir. yeah, thank you. So guys, your job is only here to focus on the content first. Second,
bringing new questions and scenarios during the session. Get it? Got it, guys? So you just need to open your mind and just go in the broader aspect and think like a pro and come with new challenges, new questions. As much as you will think about the topic, about the technologies, and you will ask and you will be clarified on that, you will learn technology well. Okay? क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं आएगा तब तक समझ में भी नहीं आएगा. आप शांति से आए, आपने देखा क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग मिल गई जी, ओके चलो हो गया डन, ऐसे नहीं होगा. आपको सीखने में इश्यू आएगा, राइट? सो आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा. I will try from my end to interact with everyone, but this is also up to you guys if you are coming from your end or not. If you are not coming, so again you guys know, एक हाथ से ताली नहीं बजती ना. दोनों तरफ से एफर्ट चाहिए. So effort will be from my end from 100%. What I am expecting from you all, you just keep your eye on the content, on the concept. और अगर नहीं समझ में आता है तुरंत पूछने का है उधर कि मुझे नहीं समझ में आया. ये नहीं कि पूछा हाँ जी आ गया समझ में, जी जी आ गया, सब समझ में आ गया. नहीं, नहीं समझ में आया पूछना है, क्योंकि हमें सीखना है चीजों को. वी आर नॉट हियर टू फॉर टॉट, नो, वी आर हियर टू लर्न. बहुत डिफरेंस है दोनों में. यहाँ पे हम लोग शिक्षा लेने के सिर्फ लिए नहीं आए, हम सीखने आए हैं इधर. क्योंकि दीज आर दी थिंग्स विच यू गाइज आर गोइंग टू get in your company as a challenge on daily basis, right? सो ये जो चीजें हम अपन सीखेंगे इधर, जो हम लोग सारे सीखने वाले CCNP सिक्योरिटी ट्रैक में, वो सारी चीजें कंपनी में ऑलरेडी चल रही हैं. कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो कि बहुत ही बेसिक है, नहीं. ये सारी चीजें ऑलरेडी रनिंग है वहां पे. ये सारे चैलेंजेस और इस तरह कॉन्फ़िगरेशन जो हम इधर देखेंगे, वो सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी हैं. तो जब आप जाओगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कुछ नया मिल जाएगा या कुछ आपके लिए सरप्राइजिंग मिल जाएगा, और ये तो मुझे पता ही नहीं है. सब चीजें उधर. जितना ज्यादा यहां से क्लैरिटी लेके जाते हो दोस्त, उतना ज्यादा आपके लिए उधर हेल्प होगा और आप ग्रो करोगे. अच्छा, चलो आते हैं टॉपिक पे. सो एटलीस्ट लेट्स गिव फ्यू मिनट्स इन दैट. सो कल जो क्लास होगा इसके बाद का कंटिन्यूएशन होगा. इवन द फर्स्ट मॉड्यूल वी आर गोइंग टू टेक VPN. ओके, everyone is with me, or any other topic you guys want me to start, then I can start from there. So this is the basic network security fundamental, which is the very basic. Most probably I will start it from not tomorrow, most probably day after tomorrow. Is that okay? But till tomorrow I'll be stick on the VPN part, introductory part only, guys. Then I will be jumping on the basic network security fundamentals. Then after that we will head towards the VPN completion. Good. So I have a question from everyone. What is VPN, guys? Once you hear about word VPN, what does that mean? That is actually not word. That is a technology. So what comes in your mind, guys? Tell me. Anyone? VPN means what? VPN is a virtual private Virtual network. private network, I guess. That is correct. That is correct. But what comes in your mind? Once you hear this word, VPN means I can access. It You can provides access. a secure net connection between server and client. Correct, correct. Really nice, nice answer. Okay, anyone else? Yeah, speak. Do not hesitate, man. No issue. Yeah, anyone else? So see, that is correct. What comes in my mind, let me tell you. Okay, someone is sending message. Sir, can someone start from basic means without CCNA? Yes, yes, start, Arun. Without CCNA, no. Without CCNA, no, sir. You should have at least basic knowledge of CCNA, right? You should have understanding of routers, switches, how they work. All these parts you should have knowledge. Routing part, something like netting, something like access control policies. All these CCNA level basic foundational things you should have. After, if you have CCNA, that's fine then. Then no worry. Ah, that is good then. That is wonderful. But without CCNA, that will be actually challenging. But I will not say no. That is totally up to the person who is learning that technology. No, that is actually
Not correct in all the aspect, but most of the time 95%, 95% plus people do not get all these topics well once they do not have these basic knowledge. Okay, that's why I'm saying. Good, no issue then. Any question from anyone? Just like Arun asked in the chat, you guys also can ask in the chat. Just put, I'll be seeing and answering that. Okay, so let's focus on the VPN. So, guys, what comes in my mind once I uh, see that word VPN? Actually, I remember that you guys remember at the time of Corona, TikTok got banned in India. What people were doing at that time? They were connecting VPNs. They were downloading some, fuzzy type VPN software from somewhere on globe and connecting them without taking care for their private informations are getting leaked or they will leak their information. No, they were just going there and connecting with that software and accessing that TikTok account. Making sense? You guys remember at that era? I think सबको पता होगा ये बात तो VPN मीन्स लोगों को क्या लगता है कि भाई VPN का मतलब भाई मैं एकदम सिक्योर हो गया। अंदर की बात बताऊं दोस्त, नहीं, VPN का मतलब सिक्योरिटी होता ही नहीं है। लुक, लेट मी टेल यू, VPN डज नॉट मीन इनक्रिप्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ दोस्त? इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास एक डिवाइस है, मैं इस डिवाइस से किसी सर्वर को एक्सेस कर रहा हूं। मेरे डिवाइस यानी मैं क्लाइंट हूं और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वो कनेक्शन जो है ना वो सिक्योर है और कोई पर्सन भी नेट पे नहीं देख सकता मेरा वो कनेक्शन। लेकिन आपको एक अंदर की बात बताता हूं, ये बात सही नहीं है। चलो इसको दूसरे एस्पेक्ट से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस, ये ब्रांच 1 है। वन सेक गाइस, जस्ट वन सेक। जस्ट सपोज गाइस ये मेरा ब्रांच 1 है। मुझे कुछ ना डिवाइसेज भी कनेक्ट करने दो यहाँ पे और कुछ पीसीज कनेक्ट कर देता हूँ। मान लो मेरे पास कुछ विंडोज 10 की 2 3 पीसी ले लेता हूँ, 4 ले लिया और यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पजेज, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। सब लोग समझ रहे हैं इसको? मेरी टोपोलॉजी सबको समझ में आ रही ना? तो मान लो मेरी ही कंपनी के 2 ब्रांच हैं, एक ब्रांच 1 है, एक ब्रांच 2 है, मेरी ही कंपनी है। मान लो आप कंपनी एबीसी में काम करते हो और आपके कंपनी के ब्रांच हैं, ब्रांच 1 और ब्रांच 2, एक है दिल्ली में, एक है मुंबई में। ऐसे समझ लेते हैं। तो मान लो ये दिल्ली वाली ब्रांच है, ये मुंबई वाली ब्रांच है। अब यहाँ पे एक यूजर बैठा है, यहाँ के एक यूजर से यानी विंडोज 4 विंडोज 6 से बात करना चाहता है। समझना बात को। तो आपकी कंपनी में क्या है, ये है इंटरनेट की लिंक, आईएसपी लिंक आई हुई है। तो यानी आपके कंपनी की जो ये एज राउटर है ब्रांच 1 का, ये कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट से, और ब्रांच 2 का जो एज राउटर है ये भी कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट से। यानी कि टेक्निकली ये सब कनेक्टेड होगा एक दूसरे से। गाइस यस नो? अगर इस टोपोलॉजी को आप देखोगे तो लग रहा है ना सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। इन एनी वे दे कैन रीच टू ईच अदर। यस नो गाइस? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब हुआ क्या कि एक हम ही लोगों में से कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर आया, नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। उसने क्या किया, उसने बोला सुनो, अगर तुम विंडोज 4 की डिवाइस को विंडोज 6 से बात कराना चाहते हो तो आपके पास कई मेथड है। उसने बोला दैट इज गुड। अब इसने बोला कि भाई ना यहाँ पे एक सर्वर है, या लेते यहाँ पे एक राउटर है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दैट। चलो इसे ले लो, राउटर ही आएगा ये। समझना बात को दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में पता चला कि भाई ब्रांच 2 का एक राउटर है जिसमें ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है। क्यों कॉन्फ़िगरेशन करना है? कुछ राउटिंग से रिलेटेड कुछ चीजें चेंज करनी है, कुछ चीजें अलाउ करनी है, कुछ चीजें डिनाई करनी है। तो हुआ क्या, ब्रांच 2 के किसी इंजीनियर ने, जूनियर इंजीनियर ने कॉल किया ब्रांच 1 के पर्सन को, बोला सर कैन यू प्लीज टेक एक्सेस ऑफ माई राउटर 8 एंड कैन डू ऑल दीज कॉन्फ़िगरेशन फॉर मी बिकॉज आई एम अलोन इन द कंपनी, आई डू नॉट नो हाउ टू डू दैट, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट?
सो समझो गाइस, सबसे पहले तो पहली बात तो ब्रांच वन का कोई भी इंजीनियर डायरेक्टली एक्सेस ले ही नहीं पाएगा R8 का, सबको पता है। सो ये क्या करेगा, ये इंटरनेट के थ्रू अगर डायरेक्ट जा रहा है विदाउट एनी सिक्योरिटी, तब तो भाई जो कमांड वगैरह भेज रहा है सब कुछ कोई भी बंदा यहाँ पे एक हैकर बैठ के पढ़ सकता है उसे। आप समझना कितना अनसेफ है एक्चुअली दुनिया। अगर मैं यहाँ पे अभी ले चलूँ, काली लिनक्स भी है मेरे पास, वाह, काली लिनक्स, लेट मी टेक इट, काली, लेट्स टेक दिस पर्सन इज सिटिंग देयर ऑन इंटरनेट। मतलब ऐसे नहीं बैठे होते जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जस्ट शो करने के लिए आपको कि एक पर्सन यहाँ बैठा है। अगर आप डायरेक्ट इंटरनेट का यूज करके इनका एक्सेस ले लोगे तो क्या होगा, कोई पर्सन कैन रीड एनीथिंग फ्रॉम हियर, राइट। एक्सेस ऐसे लेने का मतलब क्या होता है कि आपने विदाउट एनी सिक्योरिटी आपने यहां से पिंग किया इस राउटर 8 को, नेटिंग वगैरह हो रखी थी यहां से, तो आप यहां तक तो रीच हो गए। लेकिन अब यहां पे चैलेंज क्या आएगा, ये बात समझो आप। सबसे पहले अगर यहां पे प्राइवेट आईपी यूज हो रही है तो फिर क्या करोगे आप, तो ऑब्वियस सी बात है आप नेटिंग करोगे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे नेटिंग करके रखोगे सो दैट एनीवन फ्रॉम इंटरनेट इफ वांट टू कम हियर, तो वो उस पर्टिकुलर नेट वाली आईपी जो पब्लिक आईपी उसको एक्सेस करना चाहेगा तो यहां से नेटिंग होकर के ये सर्विस पा जाएगा। दैट इज गुड, नेटिंग पार्ट तक तो गुड है, अच्छा है, कोई बंदा भी आ रहा है अंदर। लेकिन दिक्कत तब स्टार्ट होती है जब ये भाई साहब कोई कॉन्फिडेंशियल चीज करना चाहते हैं इनके साथ में। जैसे मान लो इस ब्रांच वन के किसी इंजीनियर को कोई कमांड चलाना है इस राउटर 8 पे, तो इसको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले पहले तो इसका एक्सेस लेगा, किसका, R8 का। इधर का कोई भी इंजीनियर क्या करेगा, फर्स्ट इट विल ही विल आस्क फॉर एक्सेस ऑफ दिस राउटर 8। तो वो एक्सेस कैसे लेगा, कोई ऐसा है जो कंपनी में काम करता है, कैसे लेते हो आप राउटर का एक्सेस, क्या आप डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू जाके ले लेते हो या पहले कोई VPN कनेक्ट करते हो, टेल मी गाइस। किसी ने अपने कंपनी किसी डिवाइस का राउटर का स्विच का एक्सेस लिया है कभी गाइस, फ्रॉम योर होम लोकेशन, यस नो। अगर नहीं लिया कोई बात नहीं, जस्ट इन जनरल आई एम आस्किंग, एनी ऑफ यू। सर लेते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी टूल्स के थ्रू लेते हैं कि किसी का जो राउटर है उसको हमने कनेक्ट कर लिया लैपटॉप के थ्रू, और लैपटॉप का हम लोगों ने एनी डेस्क या टीम व्यूअर उठा लिया, ले लिया, तो फॉर दैट वी कैन एक्सेस द लाइक थिंग्स। ओके अंडरस्टूड। तो आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ का कोई लोकल यूजर है उसका आपने पहले डेस्कटॉप को ले लिया क्या, रिमोट, करेक्ट, यस, एनी डेस्क के थ्रू, और उसके यस बाद फिर सर। उसके लैपटॉप पे आप एक्सेस कर रहे हो क्योंकि उसको एक्सेस है इस राउटर का, राइट, यस सर। लोकल एरिया नेटवर्क, अच्छा गुड। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पे है कि ये एनी डेस्क वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा, कह रहा भाई सर आप डायरेक्ट ले लो एक्सेस इसका। तो आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे कोई एक नेटवर्क सिक्योरिटी सीनियर इंजीनियर हो तो आप क्या करोगे, आपके पास सबसे पहले एक VPN क्लाइंट इंस्टॉल होगा आपके लैपटॉप में। VPN क्लाइंट क्या करेगा, VPN क्लाइंट आपके और इसके सर्वर के बीच में, यहाँ के बीच में क्या करेगा, एक वो बना देगा, एक टनल, क्या बनाएगा दोस्त, टनल। या आप बोल सकते हो यहाँ पे अगर आप बैठे हो तो इसके बीच में और इस वाले नेटवर्क के बीच में, दोनों ब्रांच के बीच में एक टनल बन जाएगा। अब टनल क्या होता है, टनल भी इंटरनेट का ही यूज करता है, टनल भी क्या करता है, इंटरनेट का ही यूज करता है। लेकिन वो सेपरेट, एक तरह से समझ लो कि टनल कैसे बोलूं, जैसे टनल तो सबको पता है ना टनल क्या होता है, अगर टनल नॉर्मली बोलूं, टनल जैसे पाइप समझ लो, पाइप, पाइप क्या किया, एक एक पर्टिकुलर बोतल से दूसरे बोतल में पानी मान लो ट्रांसफर करना है, आपने पाइप लगाया और वो बोतल ट्रांसफर हो रहा है, बोतल से पानी ट्रांसफर हो रहा है, करेक्ट। सेम वैसे ही इंटरनेट के थ्रू आपने अपनी एक अलग टनल बना ली, एक पाइप लगा दी जो कि ऐसे बन रहा होगा इन दोनों के बीच। लेकिन यूज किसका कर रहे होंगे यहां तक वो रीच करने के लिए, इंटरनेट का। बात समझ में आई। तो उसी को एक्चुअल में VPN बोलते हैं। VPN का मतलब क्या होता है, कनेक्टिंग टू और मोर देन टू प्राइवेट नेटवर्क्स यूजिंग पब्लिक नेटवर्क। यानी अगर आप इंटरनेट का यूज करके दो या दो से अधिक प्राइवेट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देते हो उसी को VPN बोलते हैं टेक्निकली, ओके। लेकिन VPN अपने आप में सिक्योर नहीं होता। सिक्योर का मतलब आपने अगर टनल बना दिया इट डजंट मीन दे आर सिक्योर, नो, दे आर नॉट सिक्योर स्टिल। तो सिक्योर करने के लिए क्या करोगे आप, उसके ऊपर देखो आईपी अपने आप में सिक्योर नहीं है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इन इटसेल्फ इज नॉट सिक्योर्ड। तो आप अपने आईपी को से सिक्योर करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज ऊपर से अप्लाई करते हो जिसे हम बोलते हैं IPsec। क्या बोलते हैं दोस्त,
आईपी से, इन शॉर्ट IP बोल से। सकते आईपी को सिक्योर करना, आईपी सिक्योरिटी, यू कैन इवन से इन लॉन्ग। तो वीपीएन डज नॉट मीन इंक्रिप्शन, ये बड़ा अंदर की बात है। वीपीएन डज नॉट मीन इंक्रिप्शन। वीपीएन तो सिर्फ क्या करता है, दो प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क, इंटरनेट, अनट्रस्टेड नेटवर्क का यूज करके कनेक्ट कर देता है। लेकिन जो रियल में इंक्रिप्शन करता है वो आपकी आईपी को जब आप सिक्योर करते हो तब करता है। ये रियल में यहां पे हो रहा है सिक्योरिटी वाला काम। तो जैसे अगर आप लोगों ने सीसीएन ने पढ़ा होगा तो आपने एक जरूर चीज पढ़ा होगा, जीआरई टनल पढ़ा है किसी ने? एनी आइडिया अबाउट जीआरई? तो जीआरई टनल अपने आप में सिक्योर है क्या? कल दिखाऊंगा आप लोगों को जीआरई टनल। जीआरई टनल अपने आप में बिल्कुल सिक्योर नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा बना करके। लेकिन वो पब्लिक नेटवर्क का ही यूज करेगा, इंटरनेट का ही यूज करेगा। आप यहां से यहां तक जो भी बात कर रहे होगे सबको दिखाएगा प्लेन टेक्स्ट में। तो प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या है, कोई बंदा पढ़ सकता है उसे। तो अब ये भाई साहब आए यहाँ से, इन्होंने देख लिया, अच्छा ये ब्रांच वन का बंदा इधर ये कमांड भेज रहा है, अच्छा रुको, इसने क्या किया यहाँ पे चेंज किया, क्या किया, कुछ आर पॉइजन वगैरह चीज कर दिया। या क्योंकि ये तो बंदा पहुंच इस ये भी देख पा रहा है कि आप भेज रहे हो, ये पढ़ लेगा आपकी कंपनी में क्या क्या आईपी लगी है, कौन से आईपी को रिक्वेस्ट जा रहा है, क्या क्या चीज सेंड करी जा रही है। ये यहाँ से क्या कर सकता है, आपके इवन उस कनेक्शन को भी रोक सकता है यहाँ से, क्योंकि ये देख पा रहा है, पढ़ पा रहा है क्या बातें हो रही है। इवन हो सकता है कुछ ऐसे कमांड हो, कुछ आपके इंटरनल सिक्योरिटी हो, क्या पासवर्ड आप यूज कर रहे हो, सारी चीजें भी ये बंदा पढ़ पा रहा है यहाँ से। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्लेन टेक्स्ट में है दोस्त, इस वजह से। तो इंक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं, इंक्रिप्शन मीन्स क्या होता है? टेक्निकली इंक्रिप्शन मीन्स होता है कि किसी चीज को, जैसे मान लो मैंने अभी इधर एक पासवर्ड लिखा, इसको समझना, लिखा मैंने 12 इसे लिख दिया 5334, समझना। एक्चुअली ये कोड मैसेज है, क्या है ये? कोड मैसेज। ये कोड मैसेज है। मैंने बोला भाई ये इनक्रिप्टेड है, क्या बोला कि ये क्या है? इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड का मतलब जो 5334 है, एक्चुअल मैसेज ये है ही नहीं, इसका कुछ अलग मतलब होता है। ठीक है? तो इसका अलग मतलब होता है, इसको जानने के लिए क्या होगा, जब ब्रांच वन और ब्रांच टू दोनों आपस में टनल बना रहे होंगे, जो हम कल देखेंगे एक बार। जैसे जीआरई टनल की मैंने बात करी, जैसे जीआरई टनल जब बनता है, उसके बाद ब्रांच वन और ब्रांच टू के बीच में जब जीआरई टनल बनेगा, उसी बीच में ये लोग क्या करेंगे, कुछ एल्गोरिदम का आपस में नेगोशिएशन करेंगे। एल्गोरिदम मतलब समझ रहे हो ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एल्गोरिदम बोलते हैं। कुछ एल्गोरिदम का ये आपस में क्या करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, जो कि कल बहुत डिटेल में समझ में आएगा आपको। उस नेगोशिएशन में आपस में बात करेंगे 5334 का मतलब क्या होगा। तो कैसे बात कर सकते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं ABCDEF, समझते जाना दोस्त, अभी समझ में आएगा। ए का मतलब 1, दोनों पार्टी आपस में बात कर रही हैं, इसका मतलब क्या होता है। बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, डी का मतलब 4, सॉरी, ई का मतलब 5, एफ का मतलब 6। ये मान लो थी साइट 1, या आप बोलो ब्रांच 1। ठीक है? और यही सेम बात कौन कर रहा है, ब्रांच 2। ये आपस में क्या कर रहे हैं, उस टनल बनने के दौरान ये क्या कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भाई देखो, मेरे मेरी तरफ से ए का मतलब एक होता है, ये पूरा सेट ही भेज दिया कि ये मेरी डिक्शनरी है, इसका मतलब ये होता है। ये बोला अच्छा ठीक है, आई ऑल्सो एक्सेप्ट। दोनों आपस में बातचीत कर लिए, दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि अब अगर इस केस में अगर ब्रांच वन से कोई डेटा भेजा जाए और इसमें से कोई कोड लेकर के उसको लॉक कर दिया जाए, यानी इंक्रिप्ट कर दिया जाए, उसको पासवर्ड लगा दिया जाए, तो ब्रांच टू वाला जो यूजर होगा उसको खोल पाएगा कि नहीं खोल पाएगा, बताओ गाइज। जैसे इसने एक पैकेट भेजा यहां से, इसने उस पर लगा दिया पासवर्ड 5334, ये उसने देखा 5334 लगा हुआ है। इस बंदे को मिला एक कोई पैकेट, उस पर लिखा था पासवर्ड 5334। ये कैसे खोलेगा गाइस, टेल मी, हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दैट। ये जाएगा डिक्शनरी में जिसपे नेगोशिएशन हो रखा था, इसमें मैच करेगा। 5 कहाँ है जी? 5 का मतलब ई होता है, क्या होता है 5 का मतलब? ई होता है। ओके। 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब सी होता है। 3 का मतलब फिर सी होता है। और 4 का मतलब होता है डी। तो पासवर्ड क्या बन गया? यस, ECCD। तो यानी कि जब ये लॉक करके भेजेगा तो ये जो यूजर, ये भाई साहब बैठे इधर ना, ये अगर कोशिश करेंगे इसको करने की तो कर पाएंगे क्या? क्योंकि पासवर्ड भी इंक्रिप्टेड है। नहीं कर पाएंगे।
इंक्रिप्शन का मतलब एक्चुअल में होता है कोई चीज को अनरीडेबल फॉर्मेट में बना देना। किसमें? अनरीडेबल, कि आप उसको पढ़ के समझ ही ना पाओ क्या है, या ऐसा कुछ बना देना आप समझ ही नहीं पाओ क्या लिखा है यार ये, तो डिकोड हो ना पाए। तो यानी कि जो डेटा आप भेज रहे हो यहां से यहां तक, पहले तो प्लेन टेक्स्ट था, लेकिन कुछ ऐसे एल्गोरिदम है जो कि आपके ये टेक्नोलॉजीज जैसे वीपीएन टेक्नोलॉजी जो भी हैं यूज करती हैं, जो कि हम कल देखने वाले हैं, जैसे राउट बेस्ड वीपीएन होता है ना, और होता है पॉलिसी बेस्ड वीपीएन, उसको देखेंगे समझेंगे वो टेक्नोलॉजीज कैसे यूज करती हैं उन सारी चीजों को, जहां पे आपका पूरा का पूरा डेटा क्या हो जाता है, रीडेबल में से अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। बात समझ में आई? सो दैट एनी पर्सन who is sitting on internet, bad intended person he is, cannot understand what you are saying, what or what you are receiving from your second party. Understood guys? समझ पा रहे हो आप? तो ये वीपीएन के थ्रू हम समझेंगे। और जो वीपीएन का मतलब सब लोग समझते हैं बाय वीपीएन डज नॉट मीन इंक्रिप्शन गाइस एक्चुअली। तो जो इंक्रिप्शन होता है वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी हम डालते हैं उसके ऊपर से, और वही सिक्योरिटी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। करेक्ट? तो आईपी का मतलब क्या होता है? आईपी इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। आईपी का मतलब, आईपी इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। सो जिस लैंग्वेज का यूज करके आपकी नेटवर्क में बातचीत होती है उसको आईपी बोलते हैं। लेकिन अगर उसको आप सिक्योर कर दोगे तो इसको हम बोलते हैं आईपी सेक, जो कि आप देखने वाले हो अपकमिंग सेशंस में। अब सिंपल से एक एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे मैंने खोला यहाँ पे google.com. See guys, this is not only google.com, this is https.google.com. See, one sec guys. Oops, go ahead man. See, https www.google.com. See, everyone is able to see. तो जो http, दो चीजें आपने देखी होंगी, मैं आपको बताता हूं। ये तो था नॉर्मल नेटवर्क का एग्जांपल ना, ये जो मैंने आपको दिया नॉर्मल नेटवर्क का, आपके कंपनी के अंदर के नेटवर्क का एग्जांपल दे रहा था। लेकिन अगर अभी इन जनरल अभी जो अपन लोग करते हैं कोई चीज, उसमें मान लो मैंने कोई वेबसाइट ओपन करी, उसमें एच टी टी पी एक तो वेबसाइट स्टार्ट होती है, एक एच टी टी पी एस से स्टार्ट होती है। दोनों मेजर डिफरेंस क्या है सबको पता होगा। इसको बोलते हैं नॉट सिक्योर, सबने सुना है ना। लेकिन क्यों बोलते हैं? ये नॉर्मल आईपी का यूज कर रही है, बात समझ में आया? ये नॉर्मल चीजों को भेज रही है प्लेन टेक्स्ट में, और यहां पे क्या है, प्लेन टेक्स्ट के ऊपर क्या लगा हुआ है दोस्त? मीन्स इंक्रिप्शन इज अप्लाइड प्लस हैशिंग। एक हो गया प्लेन टेक्स्ट, और एक प्लेन टेक्स्ट के ऊपर इंक्रिप्शन, और साथ ही साथ इसकी जानकारी के लिए कि भाई कोई डेटा फिर भी ना किसी ने चेंज कर दिया, उसके लिए हैशिंग अप्लाई हो गया है। कौन सा मेथड सही है, ये वाला या ये वाला? बताइए गाइस, टेल मी। HTTP यूज करके वेबसाइट ओपन करना ठीक होता है या HTTPS? HTTPS। डेफिनेटली। तो HTTPS वाला जो ये एस वाला कॉन्सेप्ट है, यही एक्चुअल इसमें वीपीएन बनता है, यहाँ पे वीपीएन टनल बनता है। अब ये, अरे ये कैसे हो गया भाई? हाँ जी, यहाँ पे जो प्रोटोकॉल आप यूज करते हो आज के समय पे, तो टीएलएस यूज करते हैं हम, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योर। पहले पुराने समय पे एसएसएल यूज करते थे, सिक्योर सॉकेट लेयर, राइट? तो एक उसमें भी टनल बनता था। इंटरनेट का ही यूज करते हो अभी भी आप, गूगल से बात कर रहे हो या किसी और वेबसाइट पे कुछ एक्सेस कर रहे हो, वहां पे भी आप अभी भी इंटरनेट का ही यूज कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर टनल भी बन रहा है। तो टनल से बात कर रहे हो, टनल आपका सिक्योर हो रखा है, इंटरनेट के थ्रू अब बात कर रहे हो आप। तो ये जब वेब की बात करते हैं तो वहां पे हम एसएसएल या टीएलएस का यूज करते हैं। अभी कुछ तो ऐसी टेक्नोलॉजी जाएंगी जहां पे आईपीसेक भी यूज कर सकते हो आप। बात समझ में आई? लेकिन जब आप इंफ्रा लेवल की बात करते हो अपने कंपनी का, तो यहाँ पे हम आईपीसेक यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर वेब बेस्ड कोई एक्सेस ले रहे हो, जैसे आपने अपने राउटर का एक्सेस ले रहे हो वेबसाइट का यूज करके, जैसे किसी ब्राउजर पे जा करके अपने राउटर को एक्सेस कर रहे हो, तो वहां पे आप फिर ये वाले पे आ जाओगे, एसएसएल या टीएलएस पे, या हो सकता है वहां पे भी आप आईपी से अलाउ करो।
बात समझ में आई? ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इसको देख सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस स्टिल हियर? एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। वेरी टॉप लेवल व्यू आई हैव गिवन टुडे गाइस। दिस इज टॉप लेवल। टॉप लेवल का मतलब बहुत डिटेल्ड में नहीं है, ऊपर ऊपर का अभी बातचीत हो रही है, लेकिन कल से हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ओके, हेलो हेलो, यस नो, Okay, sir. एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन प्लीज आस्क। Not now, sir. थैंक्स अरुण। अश्वनी एनी क्वेश्चन? मोहम्मद शेख Yes, sir. एनी क्वेश्चन? मुकेश, अभिषेक, अरुण इज समवेयर आउटसाइड, राघव नो? Okay, so that was it for today. Any question if you have, then I'll be answering that. Otherwise, I'm done from my end, guys, for today. Thank you. So guys, if you have any doubt, any query, this is the right time to ask. मोहम्मद शेख, अरुण कुमार, अरुण ए, राघव शिंगला, अभिषेक कुमार, मुकेश, anyone? Sir, is there any difference, sir, between SSL and IPsec encryption? Yes, really there is difference in negotiation and encryption and hashing algorithm they are using in backend. And their work Hashing means, sir, hashing means, I didn't hashing means, understand, sir. yeah, good. Hashing is a technology that we use in our network to ensure that whatever was sent in initial point, the same thing is delivered to the destination. ओके, सो जैसे मैंने आपको एक फाइल यहां से भेजा, यहीं से, Yes. और उस फाइल का मैंने हैश वैल्यू निकाल लिया। लेट मी शो यू गाइस व्हाट आई एम सेइंग। ओके, लेट मी गो हियर, कैलकुलेट हैश वैल्यू, फाइल हैश ऑनलाइन कैलकुलेटर, राइट? दिस इज अ वेबसाइट। जैसे आपने कोई फाइल अगर यहाँ पे ड्रॉप करी ना, तो उसका एक हैश वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान लो वैल्यू आ गया 1 2 3 4, ऐसे ही एग्जाम्पल तौर पे, ऐसा नहीं आएगा, अजीब तरह का नंबर होगा वो, जिसको क्रैक कर पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है? तो अब वो जो एक वैल्यू है, जब मैं कोई फाइल आपको भेजूंगा, वो वैल्यू भी अटैच करके भेजूंगा उस चीज के साथ। तो जैसे ही आपको फाइल रिसीव होगी, तो आप अपने फाइल को तो पा गए, अब फाइल पे फिर से हैशिंग एल्गोरिदम जो भी मैंने यूज किया होगा, हमारी आपकी पहली बात हो रखी है कि भाई ये वाला हैशिंग एल्गोरिदम मैं यूज करके लगाऊंगा ये वाली वैल्यू। आपने सेम हैशिंग एल्गोरिदम यूज करके उस फाइल का वैल्यू निकाला जो मैंने भेजा था। अब उसकी जो वैल्यू आई और जो मैंने अटैच करके भेजी, दोनों आपने मैच करी। जो उसकी वैल्यू आई जो मैंने भेजी थी, दोनों को आपने क्या किया, मैच किया। अगर वो मैच हो रहा है, मतलब डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ रास्ते में नहीं किया गया। मेकिंग सेंस? सो हैशिंग एल्गोरिथम ये चीज इंश्योर करता है कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन थ्रू आउट द इंटरनेट और अनट्रस्टेड नेटवर्क, मेकिंग श्योर देर इज नो ऑल्टरेशन हैपेंड इन द वे। करेक्ट? तो ये चीज का इंश्योरिटी कौन करता है? हैशिंग एल्गोरिथम आपको। और इंक्रिप्शन, उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना, उसका फॉर्मेट ही चेंज कर देना, ये काम करता है इंक्रिप्शन, या पासवर्ड लगा देना, ये सारी काम इंक्रिप्शन के अंदर आते हैं। करेक्ट? और हैशिंग का मतलब इंश्योरिटी लेता है कि भाई देखो, ये डेटा ऑल्टर नहीं हुआ है कहीं पे, क्योंकि अगर ऑल्टर होगा फाइल का हैश वैल्यू अलग आएगा। राइट? समझ? If there any changes, hash value will change, sir. डेफिनेटली हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन मैंने तो हैश वैल्यू तब Mm. निकाला जब फाइल भेजा था। तो यानी कि अगर उससे मैच Yes, sir. नहीं हो रहा है, इसका मतलब किसी ने छेड़छाड़ किया है। करेक्ट? तो आप यहां देख भी Mm. सकते हो, जैसे अगर मैं कोई फाइल, इसको चलो एग्जांपल के तौर पे देता हूं, जैसे ये है, मान लो ये फाइल है, मैं लेता हूँ, Yes. इसको अपलोड कर रहा हूँ। देखो इसकी हैश वैल्यू क्या आ गई? अलग अलग ये एल्गोरिदम है, अलग अलग, इनका अपना अलग सेट ऑफ रूल है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उससे इन्होंने कैलकुलेट किया। चलो फॉर एग्जांपल SHA-1 आ गया। ठीक? समझ में आ गया? ये Yes, sir. SHA-1 का इतना वैल्यू आया, ये एक एल्गोरिदम है जिसने कैलकुलेट किया हैश वैल्यू इस वाली फाइल का। अब इसको ध्यान Yes. रखना, BB97 लास्ट में लिखा हुआ है, राइट? अब किसी ने इस फाइल में चेंज कर दिया और
ये फाइल चली गई, ये फाइल उसने बना दी। अब चेक करो दोनों के SHA-1 के में डिफरेंस देखो, आ रहा है डिफरेंस? हम्म तो यानी कि जैसे ही उसको आप मैंने जब भेजा था ना पर्सन को कोई चीज, तो मैंने ये लगा के भेजा था हैश वैल्यू, उसे मिली ये वाली फाइल, उसने जब हैश निकालना है तो ये आना है आंसर। अब ये दोनों को मैच करेगा, कहेगा अरे ये तो कुछ दिक्कत है भाई। क्योंकि दिक्कत है, हम्म क्या करेगा? ड्रॉप कर देगा, बोलो अच्छा, भाई नो, देयर इज सम इशू। करेक्ट? सो दिस इज द मेन हम्म थिंग एक्चुअली व्हाट हैशिंग actually ensures in our network. Good. हम्म Nice question, by the way. Anyone has another question? Please ask, guys. Yes? No? Sir, what's the use if something hash value is different? We received data like someone hacking is happened. Mm-hmm. So if there is any difference, so most probably your Mm. transmission will be stopped and interrupted, right? So what will Yes, sir. happen once you will be sending, he'll be not getting that, he'll be dropping all the things, because होता क्या है जब हम बात कर रहे होते हैं कुछ चीज भेजते हैं तो उसका क्या हमें चाहिए होता है बदले में? मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम्म आप टीसीपी यूज करोगे एक्नॉलेजमेंट आएगा, अगर टीसीपी का बात करें, राइट? yes, समझना sir. बात को, अगर टीसीपी यूज करोगे हम्म एक्नॉलेजमेंट आता है तब तो आप जान जाओगे एक्नॉलेजमेंट आया ही नहीं बहुत देर से आपके पास, तो आप भेजना ही बंद कर दोगे, कनेक्शन लॉस्ट हो गया, राइट? अच्छा अगर यूडीपी यूज हम्म कर रहे हो, यूडीपी किस किस केस में यूज करोगे? जैसे हम आप बात कर रहे हैं फोन पे, करेक्ट? इस तरह से कोई पर्सन बीच में इंटरसेप्ट कर रहा है और अपनी चीजें चेंज कर रहा है उसमें, तो आपको क्या लगता है हैशिंग यहाँ नहीं होती? यहाँ पे भी होती है किसी जगह पे हैशिंग यूज। अगर यहाँ पे उसको यूज करेंगे तो हमारी आपकी बात क्या होगी? मैं बोलूंगा आपकी आवाज ही नहीं जा रही, नेटवर्क इशू देखा कितने लोग, नेटवर्क कंजेशन हो जाता है कई बार। या वो भी छोड़ हम्म दो, कोई पर्टिकुलर फाइल आप भेज रहे हो, रिसीविंग एंड उसको पाया ही नहीं पूरी फाइल को, तो आपको क्या बोलेगा वो? आई डिड नॉट रिसीव दैट फाइल, कैन यू सेंड इट अगेन? अगर आप बार बार भेज रहे हो नहीं हम्म जा पा रहा, इसका मतलब नेटवर्क में कोई ना कोई बंदा घुस गया है। यही एक ही चीज, एक ही, ये हम्म तो एक बहुत ही इन जनरल मैंने आपको तौर पे बताया, इसके अलावा आपके फायरवॉल्स लगे होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं बहुत सारी चीजें। ईमेल सिक्योरिटी के लिए भी अलग से फायरवॉल लगा होता है, हम्म अलग अलग मॉड्यूल, उसके अलग अलग मॉड्यूल ही बोल सकते हो आप। अलग अलग सर्विसेज सब्सक्रिप्शंस आती हैं ईमेल सिक्योरिटी की, वेब सिक्योरिटी की, ये सारी फीचर्स होते हैं उसमें। नेक्स्ट जेन फायरवॉल ऐसे ऐसे बने हुए हैं कि आप बात करना स्टार्ट करोगे तो वो क्या करेंगे आपके बीच में, क्या करेंगे, एसएसएल डिक्रिप्शन कर देंगे वो। एसएसएल डिक्रिप्शन क्या होता है कि जैसे मेरी स्क्रीन दिख रही ना, हम्म, हाँ सर। जैसे मान लो, एक सेकेंड यहाँ आ जाऊं मैं, हाँ, ये बंदा बात कर रहा है इंटरनेट पे कोई एक सर्विस है उससे, समझना, यहाँ पे लगा देता हूँ एक सर्विस में, नेटवर्क पे ले गया, यहाँ पे लगा दिया ऐसे, ये भाई साहब बात कर रहे हैं इंटरनेट पे कोई सर्विस है उनसे, चलो मान लो ये फायरवॉल है, ठीक है, फायरवॉल बीच में लगा है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, राइट? बट वो फायरवॉल है नहीं वहां पे, हम्म जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आई एम जस्ट सेइंग। अब क्या हो रहा है, ये जब बात कर रहे हैं भाई साहब इंटरनेट की किसी वेबसाइट पे, या उससे ना कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, तो ये बंदा मैन इन द मिडल बन जाएगा। ये कैसे मैन इन द हम्म मिडल बनेगा? जब ये इससे कोई कम्युनिकेशन करेगा, जाहिर सी बात है कुछ इनिशियल तो कुछ बातचीत होगी ना, हाय, कुछ रिक्वेस्ट भेजेगा उस वेबसाइट को, तो ये इसके थ्रू ही जा रहा है ना, इस फायरवॉल से होके जा रहा है, तो फायरवॉल इसके बिहाफ पे इससे क्या कर लेगा, इसके बिहाफ पे ये अपना खुद का टनल बना लेगा, कौन सा, एसएसएल टीएलएस टनल बना लेगा इसके बीच में, और साथ में इसके बिहाफ पे इन भाई साहब से टनल बना लेगा। यानी कि ये इसको लग रहा है कि मैंने इसके साथ में डायरेक्ट बातचीत कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में इससे बात कर ही नहीं रहा है, किससे कर रहा है डायरेक्ट बात, अपने फायरवॉल से, और फायरवॉल फिर इससे कुछ जो डिटेल पा रहा है उसको लेकर के फिर आगे इसको भेज रहा है। तो अगर इस बीच में कुछ भी हम्म चीजें चेंज होगी तो पहले फायरवॉल क्या कर देगा, पहले ही ये जान जाएगा क्या हो रहा है, करेक्ट? तो अगर इसको कोई भी थ्रेट या कोई भी वायरस मिले तो यहीं पे उड़ा देगा उसको, तो अंदर तक तो घुसने ही नहीं देगा वो। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एसएसएल डिक्रिप्शन, या बोल सकते हो इंस्पेक्शन, एसएसएल इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन भी बोलते हैं कई बार, नाम अलग है काम एक ही है। हाँ सर। अंडरस्टूड?
तो इस तरह की हाँ सर। सिक्योरिटी लगी होती है, तो ऐसा कोई चांस बड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी हैकर्स तो हैकर ही हैं भाई। उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। आपका यूजर था, समझना बात को, आपके यूजर को एक ईमेल भेज दिया। अब ईमेल तो भाई इनक्रिप्ट होके आएगी। अब इनक्रिप्शन में उसने कहीं बाहर से ईमेल भेजा, आपके किसी यूजर के किस पे आ गया, सिस्टम पे आ गया, और उस ईमेल में थी कोई ही गलत लिंक, और इन भाई साहब ने क्लिक किया उस पे, और वो लिंक ऐसी थी कि ये फायरवॉल भी नहीं पकड़ पाया। इसीलिए जब आप हैकर्स को देखते होगे ना, हैकर्स बहुत अप टू डेट रहते हैं। हैकर्स बहुत अप टू डेट रहते हैं। वो क्या करते हैं, उनको लैंग्वेज भी आती है, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती है, तो पाइथन वगैरह का यूज करके वो नई नई स्क्रिप्ट लिखते हैं, और नए तरह के वायरसेज वगैरह, नए नए तरह के टेक्निक यूज करके आपके सिस्टम में भेजते हैं कंपनीज में। और वहां के यूजर जैसे क्लिक करता है, इवन आपका फायरवॉल भी डिटेक्ट नहीं कर पाता उसको, क्योंकि फायरवॉल कभी ऐसे थोड़ा डिटेक्ट करता है, ये तो किसी एक सिग्नेचर के बेस पे काम करता है, ये बिहेवियर के बेस पे काम करता है कि कोई ट्रैफिक जा रही है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके बेस पे एक्शन ले लेता है। कि इस बंदे का ना, जैसे कोई पर्सन आया, लग रहा है उसको देखिए हुए, यार ये शराब वराब पी के आ रहा है, अजीब तरह से गाड़ी चला रहा है, तो आप बोलोगे यार इसका बिहेवियर सही नहीं, थोड़ा आप साइड में हो जाते हो। ऐसा होता है ना। सेम फायरवॉल इस तरह से डिजाइंड होते हैं कि बिहेवियर देखते हैं, फाइल क्या बिहेवियर है, इस फाइल का कैसे बिहेव कर रही है, करेक्ट, उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं कि तो भाई ब्लॉक कर दूं या अलाउ करूं। लेकिन इसने एक ऐसा कुछ बना दिया पैच, या ऐसा कुछ तरह का आप इसने बग निकाल लिया, या ऐसा कुछ प्रोग्राम बना दिया कि इस भाई साहब के, इन भाई साहब के लिए नया है वो, तो नया है तो इसका मतलब थोड़ा ना खराब है, तो इसको तो पता ही नहीं है, तो मानेगा यार वाइट वाइट फ्लैग है, जाने दो। उस चक्कर में आपका कोई इंटरनल सिस्टम कंप्रोमाइज कर लिया इसने, यानी इसको हैक कर लिया। अब इस सिस्टम का यूज करके पूरे आपके इधर के अंदर का हिसाब किताब हिला देगा ये। बात समझ में आ रही है? तो दे आर सो मेनी थिंग्स। अगर आप लोगों ने सीसीएनपी या सीसीएनए में ही डिटेल्ड में थोड़ा सा पढ़ा होगा, जैसे डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन, डीएचसीपी स्नूपिंग, ये सब चीजें अगर आपने पढ़ी होंगी, तो माइट बी यू गाइस विल बी अवेयर अबाउट, करेक्ट। तो ये सारी चीजें वहां पे आपको बताई जाती हैं कैसे होता है, ठीक है ना, आर्प स्पूफिंग, ये सारी चीजें। यस, इफ यू गाइस विल केयर, देन आई कैन टेल यू अबाउट दैट ड्यूरिंग आवर क्लासेस, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इस तरह की चीजें होती हैं, जिसको आप राउटर लेवल पे भी फिनिश कर सकते हो। इवन राउटर कैन अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, जो मैंने अभी बोला उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और राउटिंग स्विचिंग के अंदर आता है, अपने सिक्योरिटी में नहीं आता है। सो अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है इन फ्यूचर जिसमें मुझे लगता है कि नहीं ये रिलेवेंट होगा, एग्जांपल लेना, देन आई कैन शो यू दैट एज वेल। लेकिन अभी थियरेटिकल सर नॉलेज। हम बोलो बोलो। सर वीपीएन वीपीएन आईपी सेक तो हम राउटर्स में भी कर सकते हैं ना सर, फायरवॉल्स की जरूरत है हाँ, नहीं ना? बिल्कुल राउटर पे कर सकते हो, फायरवॉल में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट क्योंकि अपने सिलेबस हम्म। में तो हम सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर कंपनी वीपीएन विल बी टर्मिनेटेड ऑन योर फायरवॉल, वो राउटर को पे नहीं करते टर्मिनेट, मोस्ट ऑफ द केसेस। यह हो सकता है, अच्छा। डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है, या क्यों कंपनी के अंदर अपना हम्म। बजटिंग होएगा, कितना बजट है आईटी का, करेक्ट, इंफ्रा कैसी डिजाइन है, हाँ। सिक्योरिटी का क्या लेवल होगा। जैसे कई कंपनीज हैं, आप उसमें जाएंगे तो वहां पे सिक्योरिटी है ही नहीं कुछ, हर बंदे के पास सारा एक्सेस है, तो उनको क्या फर्क पड़ता है राउटर लगा रखा है, क्या हम्म। लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी का सर्विस ले रखा है, राइट, ये सब करवा रहे अच्छा। हैं। तो डिपेंड करता है, अगेन आपकी कंपनी का नेचर क्या है। जैसे आप कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, आप किसी बैंक का प्रोजेक्ट है आपकी कंपनी में, तब समझ जाओ क्या करना है। अब बताने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया का सबसे महंगा से महंगा फायरवॉल लाके लगाओगे और उस पर वीपीएन टर्मिनेट करवाओगे क्योंकि सिक्योरिटी इज द मेन कंसर्न नाउ। यस। सो माइट अच्छा। आपके सिस्टम स्लो चलेंगे, आप कंपनी के अगर किसी बहुत ही रेपुटेटेड या एमएनसी में ज्वाइन करोगे, बिलीव मी गाइस, आई एम वर्किंग विद अ कंपनी, दे प्रोवाइडेड मी 32 GB ऑफ रैम लैपटॉप, एकदम अप टू डेट वाला मार्केट में। और मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मैं उसमें शेयर कर दूंगा अपनी स्क्रीन, हैंग हो जाएगा मेरा लैपटॉप। तो अब आप समझो किस लेवल की सिक्योरिटी है उनकी, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई कर दोगे तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, करेक्ट। और अगर सिक्योरिटी एकदम लो कर हम्म। दोगे, परफॉर्मेंस हाई रहेगी, लेकिन आप फिर अनसिक्योर हो गए। तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, टू मेक श्योर परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी बोथ इज देयर। सो हमें थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच में चीजें करनी पड़ती, इसीलिए इतनी टेक्नोलॉजीज की नॉलेज हमें होनी चाहिए, करेक्ट। टेक्नोलॉजी हम्म। अपनी जगह पे है, लेकिन जो एक होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कंपनी के अंदर में एग्रीमेंट, रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट का, वो अलग जगह है। अब आपको टेक्नोलॉजी बहुत सारी आएगी, उसकी रिक्वायरमेंट तो ही फुलफिल कर पाओगे,
इसीलिए टेक्नोलॉजी का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बोला कि हम राउटर्स पे भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब कोई आया क्लाइंट बोल रहा है राउटर पे ही करो, आपको पता है कर दिया। कोई आया नहीं नहीं मुझे ना फायरवॉल पे करना है, भी नेक्स्ट जेन फायरवॉल पे करना है टर्मिनेट, अब उसमें भी पता होना चाहिए, उस पे भी कर देंगे जी। लाइए आप दीजिए, मुझे पता सारा टेक्नोलॉजी, आई विल डू दैट फॉर यू फॉर व्हाट आई एम गेटिंग पेड हियर, करेक्ट। तो कुछ इस तरह से इस अप्रोच पे काम करती है इंडस्ट्री एक्चुअली। ओके, Thank you, sir. Thank you very much. most welcome, man. Okay, anyone else, guys, have any question? See, guys, this was just from my end. This was just like a demo, not nothing else, not more than that. But from tomorrow, you'll be seeing different approach of the teaching style and the explaining style, because from tomorrow I'm going to start the real concept part. Okay? सो ये तो ऐसे इंट्रोडक्शन टाइप का था, और मुझे आप लोगों से मिलना था कि हाँ जी कौन किस बैकग्राउंड से आता है, किस क्या उनकी नॉलेज लेवल क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मोस्ट ऑफ द पीपल डिड नॉट गिव एनी इंट्रोडक्शन, नो इशू, लेटर ऑन आई विल बी टॉकिंग विद देम। शिवम त्यागी इज हियर फॉर एग्जांपल, बात नहीं हुई मेरी। ओके, या नो इशू गाइस, इफ क्वेश्चंस। Hi, Amit sir. Shivam this side. हाय शिवम, यस, I so I'm working as a network security engineer. I have a hands-on Zscaler, ZPA, and lately I am associated with the project where I need to do troubleshooting on FortiGate, firewall, Fortinet infra basically. So earlier I worked on Cisco Meraki, Cisco SA, but Fortinet is quite near to me. So I thought that I would get a hands-on, and specifically here, Forti Manager is the crucial key area for the support. ओके, गुड। So I thought, if in case you could just let me know, are we going to cover the Forti Manager basic part, assigning policies on Fortinet firewall and all? Here, I don't think so. Okay. Because CCNP security is specifically for Cisco products. Mm-hmm. So 40 manager is almost similar to your FMC, correct? Mm-hmm. That we shall be using in our this training to centrally manage our FTT firewalls. But if you talk about 40 manager, do we are going to discuss here? No. Here no, because this that is not in any module of CCNP. CCNP, Okay. especially, you know already, right? Designed for. Yeah. So I thought that you'd provide training on FortiGate infra as well, other Yes, than I do provide, but cybersecurity guys. okay. In this, no. But if you talk Yeah. about in that, then most probably yes. Okay. Okay. Yeah. Got your point. Okay. Okay, Shivam, no issue. So, I will be more than happy to see you in that class. No worry. There we will be talking about that 40 manager. Okay. 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 Thanks, Thank you. Shivam, for your time. Thank you. Thanks, sir. Yes, Ashwani Mohammad Sheikh, I already talked with him, and Abhishek. If no questions, then I think we can leave for the day. Yes. Sure, sir. I don't have any question right now. Thanks, Ashwani. Thanks, Abhishek Raghav. Hi, Raghav. From the initial, you're not saying anything from the beginning. If you have any question, no issue. You can also send message here. I'll be more than happy to answer that. If no, then I'm feeling positive and I'm just relating it like you have all the answer already and your all the questions is already answered in this session. Okay, so I think all doubts are clear as of now. So we'll see tomorrow. Okay, sir. Thank you, sir, and thank you guys for joining us today. Thanks, man. Thank you all for joining Thank this session. you. Thank It you. was really pleasure to meet you guys. Bye bye. Take Thank you, care. sir. Thank you very much, sir. Bye, Thank you for sir. Bye, guys. Take care. Thank you.